थैंक यू फॉर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड इंट्रो में तो कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इंट्रो भी था नहीं कुछ। यही है इंट्रो। अब जो भी थैंक यू कर रहा हूँ जो आपको मैं, धन्यवाद। अभी देख लो, चलो देख लो आगे। Shikora finally stops trying to physically battle Superman and simply enslaves him in magical raids. And this actually makes sense. I'm not sure if the writer was actually trying to keep something about Superman accurate to the comics, because in the comics, one of Superman's few weaknesses is magic. However, that would probably be giving it too much credit, because keep in mind, we are 25% of the way into this comic and we still haven't been introduced to the main character. Superman tells Shikora that there are other heroes that will stop him, and immediately rats out Batman and Spider-Man. The story cuts to Batman, who's shouting out he's and Nagraj. लिखा उसने and Nagraj. secret identity while swinging above the city. He is immediately imprisoned by Shikora and is shown to be utterly useless. Then the story cuts to France for Spider. Okay, तो पहली बात तो स्पाइडरमैन फ्रांस में नहीं रहता। दूसरी बात, ये जो फिगर बनाया हुआ है ये थोड़ा सा टेक्निकली ठीक नहीं लग रहा मुझे। एंड वो आईफिल टावर पे क्या वो, हाँ वो ओके बॉम्ब डिफ्यूज़ करेगा वो अपेरेंटली। जहाँ तक मुझे याद है ये डिफ्यूज़ नहीं करता है, तो और किसी ने अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपको अभी पता लग जाएगा कि बॉम्ब का क्या करता है। The perspective on Spidey on the Eiffel Tower is pretty weird. It reminds me of the time J. Scott Campbell drew Spider-Man as being able to stretch out to 2 stories high. Oh, hey. Why is Spider-Man having an adventure in France? Why not New York City, where he's from? Nagraj often traveled एक मिनट, France. Why not New York? ये कौन सा इशू है भाई? अरे दिस इज लिटरली दैट, इट लुक्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू द कवर ऑफ अमेजिंग फैंटेसी। आई थिंक इट वाज द 63rd इशू और समथिंग, मुझे नंबर नहीं याद, बट इट लुक्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू दैट इशू जिसमें स्पाइडरमैन पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अमेजिंग फैंटेसी कॉमिक बुक थी वो। उसका कौन सा इशू है आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ ये उस, क्योंकि ये जो ड्रॉ किया हुआ फिगर ये सेम टू सेम उसकी तरह ही लग रहा है। I might be wrong, but this actually looks very similar to that. Nagraj often traveled all around the world, so maybe the comic was just trying to show more of that. But then again, New York is just as foreign to India as Paris is, so I don't have a good answer here. I will say that in this scene, Spider-Man is defusing a bomb, and in the 1980 movie Superman 2, Superman saves the Eiffel Tower from a bomb. So maybe that was the inspiration here? Maybe. No matter, because Spider-Man is captured just as easily as Batman, and the bomb is also frozen with Spider-Man. In storytelling terms, introducing this bomb is an example of the playwright's term, Chekhov's gun, which refers to the story structure suggesting that if in Act 1 you show that there's a weapon, by the final act, that weapon has to be used. Let's see what happens in this comic. And here we go. On page 11 of 30, we get to see the title character, Nagraj. He's taken his girlfriend, Visarpi, to the circus. There he orders her to be quiet. For a character introduction, seeing the main character sitting down from behind is not the most It worked in the 90s, especially in India. This worked. The dialogues worked. Like, चुपचाप देखो सर्कस। लाइक मैंने जो भी टोन बोला उस टोन में नहीं, लाइक अब ज़रा चुपचाप सर्कस देखो, मज़ा लो। लाइक दैट वाज द टोन। आई वोंट बी एबल टू लाइक फुली explain the nuance behind the dialogue, but like the cultural nuances, there are cultural I can say the word cultural। एक मिनट रुको यार, करनी शरारी। Cultural. भाई क्या हो गया मुझे, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? Cultural. Cultural.
cultural. Shut the hell your mouth! Let's continue the video. And the first thing he does is tell his girlfriend to pipe down. What a hero. Immediately, there's chaos as Shakura attacks the circus. भाई लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आएगा, ये इस कैरेक्टर का नाम तूफान है, ये जो नीचे है हाथी के नीचे बना है, इसके यहाँ मुंह पे कुछ ऐसा ये कुछ परमानेंटली ही कुछ ऐसा टपक रहा है या क्या बना है मुझे नहीं पता, मेकअप है ऐसा. बचपन में भी मैं सोचता था, मुझे समझ नहीं आता था, लाइक इट्स लाइक परमानेंट स्वेट ड्रॉप ऑन हिज फेस. It's just there. I don't know what that is, but okay. By using elephants, you'd think his magic stasis would work fine, but this time he uses hypnotized elephants. We're told the name of the elephant that Shakura rides on, but no offense to those of you in the audience who are elephants, but who cares? Speaking of names, we're also given the name of the ringmaster, which is Lou Albano? Lou Albano was a pro wrestling manager. He wore rubber bands in his beard. That was his thing. You might also remember him as... Oh! Wait अरे भाई ये राज कॉमिक्स और इनका रेसलर से रेफरेंस भाई ये लगा तो हुआ है इसके मुंह पे. ल्यू एल्बान, अरे भाई देखो डूड ये लगा हुआ है. Wore rubber bands in his beard. That was his thing. You might also remember him as Super Mario from the live-action segments of the 80s TV show. Not at that's all. a very specific name. I doubt there's many other Lou Albanos out there. Well, this comic uses that name, which is a lot like naming your fictional character something like Nissan Altima. The story tells us that Nagraj, quote, smelled the danger, which I guess means the elephant took a huge crap. Nagraj runs in to stop the rampaging beast and is completely ineffective. In fact, he begins to get crushed. So, what are Nagraj's superpowers? Well, they're actually quite extensive. Okay, let's see. He has thousands of tiny snakes living inside of him, and he can summon them whenever he wants. Correct. He can form them into things like ropes and parachutes. He has incredibly powerful venom if he bites someone. He can also use powerful hypnotism, and he can sometimes just break apart his body into millions of little snakes and then reform, which can make him intangible. So there's a lot of powers there, but sure enough, I guess super strength is not one. Also, just to add in a few of those powers, नागराज को अगर कोई काट लेता है तो वो बंदा गल सकता है क्योंकि वेनम उसके शरीर में बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. कुछ और पावर्स उसकी हैं कि उसकी बॉडी में बहुत सारे सांप जो है वो रह सकते हैं, वो एक्चुअली वास कर सकते हैं उसके शरीर में, लाइक सोडांगी हो गया, एंड नागू है, नाग प्रेत है, नागार्जुन है, नाग फनी, एंड एक और भी हैं, 2-3 लोग और भी हैं जो कि लाइक हैं तो उसके साइडकिक्स, बट दे एक्चुअली लिव इन हिज बॉडी. तो वो भी मतलब इसी तरह से उसके अंदर से निकल के आ सकते हैं भाई कभी भी. एंड जितने वो एडअप कर सकता है नाग मानव अपनी बॉडी में, उतनी उसकी पावर इंक्रीज होती रहती है. सो दिस इज़ वन ट्रोप दैट आई वुड लाइक टू ऐड in his list of superpowers. Personally, I think I'd be willing to trade one of those snake powers for the ability to have a little bit of strength, but that's just me. Strength है, Ringmaster Lou Albano is able to knock the elephant back, and Nagraj shakes his hand very awkwardly to thank him for the help. Nagraj tries to explain that he could definitely have beaten the elephant if it was normal, and Albano is polite enough to not call him on his bullshit. भाई नहीं सीरियसली यार, इसके मुंह पे ये क्यों बना दिया उन्हें? Now that I get the reference, I'm more furious than ever. भाई ये out of all the things, why did they have to choose this particular thing for, like, he looks nothing like Lou Albano उसका, लेकिन वो आपने ले लिया एक रेफरेंस, और यहाँ उसका वो क्यों लटका दिया फॉर सम रीज़न, वो रबर बैंड या जो भी स्वेट ड्रॉप, रबर बैंड लग ही नहीं रहा ना. वो प्रॉब्लम ये हो जाती है देखो, क्योंकि रिसर्च करना ज़रूरी होता है, एंड आप अगर रिसर्च करके कहीं से रेफरेंस उठा रहे हो तो
वो रेफरेंस थोड़ा होना चाहिए कि मतलब उसको आगे जाके कुछ ऐसा फीलिंग ना हो कि यार वो आउटडेटेड लगने लगे, ठीक है। तो मतलब बहुत सी हमेशा ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है, मैं ये मानता हूँ। एंड उस समय पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि आप बहुत ही एडवांस रिसर्च कर पाओ, बट कम से कम इसको तो थोड़ा सा मतलब बेटर आप कर सकते थे। लाइक दिस डजंट मेक सेंस टू मी, एटलीस्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो मे बी। Shakura jumps off the elephant with this fascinating या sound effect. पलटी खा ली, Do you think it's supposed to sound गुलाटी मार दो। like cheese or chess? Either way, it's a very unique sound to make by jumping. Nagraj now uses one of his powers, summoning a snake rope and then trying to just strangle Shakura to death. Shakura summons a wooden ball cage to roll towards the knocked out Albano, and Nagraj jumps down to save him, kicking the cage to pieces. Inside are the various superheroes, which Nagraj acts like he knows. Batman seems to be radioactive. Brother. Shakura continues to spread chaos, and we're told that he hurt Visarpi's feet. It's important to realize that the artist did not feel like a dramatic event like burning the superhero's girlfriend's feet was important enough to include on panel. Now, I'm not trying to get a big score on WikiFeet or anything, but I think that might have been worth including within the artwork. Shakura now sets the circus fun. The artist just didn't know how to make feet. No insult भाई, offend हो जाते हैं। मैं insult नहीं कर रहा हूँ, मजाक है, ठीक है। Raj decides that the best course of action is to save the superheroes. I hope the circus guests have already escaped. Raj hops to put each hero on the tiny choo-choo train under the circus tent. Superman calls Nagraj dear. भाई वो ट्रेन पे अरे यार उस ट्रेन पे क्यों ऐसे बैठा हुआ है भाई ये बच्चे बैठते हो। Dude, that's literally made for like those small heighted dwarfs. भाई ये क्या है ये और सुपरमैन के पास आके वो बोलता है, भाई सुपरमैन बोला नागराज डियर। भाई मे भी मुझे अब याद नहीं है यार, वो कॉमिक भी मेरे हाथ से पता नहीं कहाँ चली गई अब, हुआ करती थी, बट नागराज डियर नहीं था यार हिंदी में, सॉरी प्रिया नागराज भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एंड ये क्या एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना ज़रूरी नहीं होता है, ये राज कॉमिक्स वालों को समझना होगा ये क्यों करते हैं ये लोग ऐसा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे रिसेंटली बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल के लिए, यूट्यूब पे भी फेसबुक पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, एंड मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ और आपके सामने लाता रहूँ। एंड पार्ट 3 अभी मैं एडिट करने बैठूँगा, अभी तक सेकंड ही हो पाया है, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।